Not directly, but indirectly, if a few people have started feeling that maybe she's shifted to Bombay, so she doesn't work in the Punjabi industry. But I think I'm waiting for right scripts in Punjab जिस पे मैं काम कर सकूँ. And starting a new journey, be it Bombay or be it any other city, is always a task, leaving your family behind, making new friends, getting comfortable with the vibe of the city. So that initially was a challenge, but now I think Bombay is my home and I've accepted it truly. I loved it. It was magical. I think words will fall short if I start explaining. And I was very clear. I don't want to go into a VIP zone or anything. मुझे स्टेज के पास जाना था, इसलिए मैं आई वोंट लाई, मैं एक फैन गर्ल की तरह 5 बजे जाके वहाँ पे बैठी हूँ ताकि मुझे बेस्ट एक्सपीरियंस मिले. एंड जो एक्सपीरियंस वहाँ मिलता है मुझे नहीं लगता और कहीं मिलता है. इट वॉज मैजिकल. मैं जब से आई हूँ वी हैव बीन टॉकिंग, अरे खत्म हो गया, ओ शिट. So yeah, it's magical. I think so. अगर मैं free हुई, I would want to go. It is a concert that एक बार आप चले जाओ ना, आपका मन करेगा मैं वापस जाऊँ. एंड हमारे आसपास ऐसे लोग थे who were attending the concert for the third time. तो इनिशियली मेरे को लगा थर्ड टाइम क्यों अटेंड कर रहे हैं, बट नाउ आफ्टर द कॉन्सर्ट आई फील लाइक नहीं, अगर मुझे 10 बार 100 बार भी अटेंड करने को मिले मैं जाऊंगी. आई वुड लव टू. बकेट लिस्ट मेरी अंदर लिखी हुई है. आई विल शो यू अ पिक्चर. लाइक येस्टरडे आई टिक्ड द इल्यूमिनाटी टूर पे मैंने एक टिक किया है मेरी बकेट लिस्ट पे. एंड आई हैव बिन एवर सिंस आई डिड माई फर्स्ट फिल्म इन द पंजाबी इंडस्ट्री. He's a senior actor, but he has been like my dream actor जिसके साथ मुझे काम करना है. Favorite co-stars? I think Guri. He's a Punjabi co-actor and we are really good friends. So it's been fun working with him. Punjabi song that describes my पर्सनैलिटी. ती सरदारा दी है सिद्धू मूसेवाला वाला. सो हाँ, वो सरदारों वाली आकड़ एंड थोड़ी सी टॉर है, बट आई एम इवन स्वीट एंड जेंटल. In Punjab, Jagdeep Sidhu. In Bollywood, I think we have many great actors. Sanjay Leela Bhansali would be one sabki list mein. Other than that, I think I love Bala sir's work. Jigra recently. I don't know what people feel about it, but I loved the movie. Aloo paranthe any day. No, I won't. I want everything. That's a tough question. I think Khatro Ke Khiladi. Not for the fame, but I want to challenge myself कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ in that context. In my role, I think Sharvari. Yeah. And why? I am in love with her these days, someone who's really doing justice to whatever she's got, and she's playing everything outstandingly, from Maharaj to Veda to, Munjia, all those characters. I can see that she's a versatile actor and can perform. So I think Ira also she can do. I think I've been fortunate enough कि ऐसा कुछ अभी तक मैंने कुछ भी face नहीं किया है, so I won't lie about it. I haven't faced any casting couch or I haven't faced anyone offering me any kind of a compromise. So I think I've been safe and I am blessed कि अभी तक ऐसा कुछ I haven't faced. No. I think I'm a director's actor. And I entirely trust my director. Once I'm in a project, whatever vision he has, I have to do justice to that. So that's why I think abhi tak mera bahut smoothly chala hai.
Dramatically, favorite Punjabi dialogue would be जिथे चलेगा नाल चलूंगी तेरे टिकटां दो लै ली. No New Year resolutions as of now. I think it's towards the last week of December when we start thinking, oh, New Year resolution, gym जाएंगे, ये करेंगे, but they always, हमेशा टूट जाते हैं ये resolutions. But I have my 2025 की bucket list ready. उसमें से एक चीज़ है that I want to try to climb Mount Kilimanjaro this year, coming year. आई थिंक एज एन एक्टर हमें बनाने वाले भी आप ही हो, हमें तोड़ने वाले भी आप ही हो, तो प्लीज़ शावर अ लॉट ऑफ लव एंड अ लॉट ऑफ सपोर्ट फॉर मी एंड आई होप आई कीप ऑन ब्रिंगिंग द बेस्ट प्रोजेक्ट्स फॉर यू पीपल एंड आई नो आप लोग सपोर्ट करोगे. अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेके आई एम अ बिट टाइट लिप्ड राइट नाउ. आई एम नॉट रियली allowed to share much, so फिलहाल I won't.